एनीवेज आमर क्वेश्चन थिला यू सी दिस जस्ट अ स्मॉल सेक्शनल टेस्ट थिला इंडियन पॉलिटी रो 10 मार्क्स एंड 8टा क्वेश्चन थिला ठीक अच्छे तो मोर एटा कौन कि एटा ए जो क्वेश्चन टा दबार गोटे रीजन है कौन ठीक अच्छे यू कैन आउ गोटे कथा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जो डाउट अच्छे वी कैन हैव अ डिस्कशन जेते एटा मेन्स आंसर राइटिंग ना सो डिस्कशन डेलिब्रेशन एटी हे परिबो ठीक अच्छे आउ गोटे क्वेश्चन मते पचारि आरथिले हाउ मेनी ऑफ योर पीएसआर वाला के पीएसआर वाला अछन एटी मत किछि आंसर देखुले मत लागला कि पीएसआर माने ऑलमोस्ट पीएसआर वाला आंसर थिला जेंते इंडियन सेक्युलरिज्म ऊपर थिला क्वेश्चन ओके ठीक अच्छे एनीवेज हाँ okay first of all this question is that how is the Indian concept of secularism different from the how the Indian concept of secularism different from the western model of secularism ठीक है देखो ए क्वेश्चन टा कोन कि आई नो इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन बट एटा यूपीएससी वाला क्वेश्चन एंड आमे जानिछु ओपीएससी यूपीएससी थीन गुडा रिपीट करूछि ठीक अच्छे बट हाँ जो एमती क्वेश्चन जो लिखब ना ट्राई टू गिव कोट तुम कोटा दबा को पड़ो राइट कोट गोटे दबा को पड़ो जस्ट गोटे देख ये क्वेश्चन आई थिंक प्रकाश यस सी हाउ दिस गाय इज रिटन है ना प्रकाश इज देयर हाँ प्रसाद विघ्नेश ना हु रोड दिस सर पॉलिटी प्रकाश नहीं आई थिंक सम अदर दीडा प्रकाश अच्छा यू रोट ना प्रकाश पत्रा ठीक अच्छे ओके जो आंसर दब जो तुम कॉपीटा दब ना जस्ट गिव योर राइटिंग तुम नाटा पूरा लिखिदब है ठीक अच्छे सी दिस मुझे चेक करूँ हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एटा मुझे चेक कर देछि मुझे आर अनचेक्ड वाला आनुछि see this it लिखा देखो according to the Rajiv Bhargav Indian constitution is not about strict separation but maintaining principal distance model of secularism गोटे जिनस हला कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म अछि ना इंडियन सेक्युलरिज्म इज ऑलवेज अबाउट देखो आमर जो स्टेट ना इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस ऑल द रिलीजियस हला इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑल रिलीजियस ठीक अछि काहे कि आमर गोटे जिनस अछि कि सर्वधर्म संभाव रो कांसेप्ट अछि ओके सर्वधर्म संभाव ठीक अच्छे आम को रिलीजन को प्राधान्य दे पारिनु को रिलीजन को फेवर कर पारिनु आ गोटे जिनस हला कि इंडियन मॉडल जो सेक्युलरिज्म अछि ना ताको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कथा काहे कि स्टेट इंटरफेयर कर पारिबो एंड स्टेट रेगुलेट भी कर पारिबो किंतु मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न मॉडल सेक्युलरिज्म कोन नेगेटिव सेक्युलरिज्म कोन काहे कि स्टेट सेठी इंटरफेयर करिवोनी स्टेट सेतो इंटरफेयर करिवो व्हेन यू आर अफेक्टिंग द पब्लिक स्फीयर when you're engrossing into the public sphere then state will interfere ठीक अच्छे सेटा कौन जमी फ्रांस रे जो फ्रांस रे हिजाब बैन होता से मैंने कौन कले तुम स्कूल होगा पब्लिक प्लेसेस रे तुम हिजाब पिंधि पार तुम घर भितर जहाँ कर यू डू इट बुझिपार ताको पर्सनल स्पेयर कहते वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एट योर ओन पर्सनल लेवल बट हाँ पब्लिक लेवल रखी तुम जमी तुम टर्बन पिंधुच राइट टर्बन को लेकिन इश्यू होता बिकज दे थिंक इट्स एन अफगान मॉडल टर्बन भीतर किसी आनिक आसपे तो से जिनस कौन ट्राई टू पुट अ बैन ऑन पब्लिक प्लेसेस ठीक अच्छे सो इट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल एंड इक्वल डिग्निटी ऑफ ऑल रिलीजन्स ठीक अच्छे आउ गोटे जिन मुझे कहीपरि आउ गोटे लगे तुम जो शुणी थो इट इज अ पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल एटा मुझे कहूनी एटा तुमको लिखा कहूनी जेहेतु आम पीएसआर ये सब जिन पढ़ुଛୁ मुझे जिन कह कहीं गोटे जिन कि जो सेक्युलरिज्म पर लिखुना जस्ट रिमेंबर पी स्क्वायर राजीव भार्गव जो पॉलिटिकल कमेंटेटर थिला से कहते कि इट इज ऑलवेज मेंटेनिंग प्रिंसिपल डिस्टेंस एंड पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल कहीं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल इट इज बिकॉज जो आमर कौन होता जितना हमारे इंडिपेंडेंस होता ना जितना आज़ादी होता ना व्हेन देयर वाज टू डोमिनेंस पाकिस्तान एंड इंडिया ना तो एड़ा कहा जाए कि माइनॉरिटी को मोर राइट्स दबा सो इंडिया इज डूइंग व्हाट पॉलिटिकली नेगोशिएट मैंने बेसी राइट्स दबा माइनॉरिटी को आर्टिकल 29-30
माने एक्सेसिव राइट्स दिया जाए माइनॉरिटी को कंपेयर टू द मेजोरिटी कम्युनिटी कहीं इट इज शोइंग दैट वी आर मोर सेक्युलर देन पाकिस्तान पाकिस्तान को शो करने पे तो आम सीना कौच आम किसी दबुनु बट वी आर गिविंग मोर राइट्स दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल ओके तो एटा गोटे इट्स ए नाइस कौन जस्ट ए नाइस माने मु कहि परिबी इट्स अ वेरी गुड आंसर एट पीएसआर स्टैंडर्ड बट हाँ तुम GS2 रे जो GS2 लिखुच आई डोंट नो इट इज एडमिसिबल और नॉट बट हाँ राइट नाउ वी नीड टू गेट मोर गुड मार्क्स राइट तुम जिते कम लिखि पार से भल बिकज यू हैव टू अटेंड एवरीथिंग राइट कहीं किसी किसी क्वेश्चन से तुम एत लिखिदेव लास्ट को लास्ट 2-3टा क्वेश्चन रही सो राइट कौन राइट जेन्युइन आंसर्स देन गो फॉर इट ठीक अच्छे जमती ये डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल सर ये तो कौन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट कौन गांधी कहते सर्वधर्म संभाव ठीक अच्छे इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स सेम जिन वेस्टर्न कौन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट कहीं से कौन था मेकियावेली गोटे थिंकर था जोटा कि चर्च दखल अंदाज बहुत था से टाइम स्टेट रे सो ही वांटेड टू सेपरेट चर्च फ्रॉम द स्टेट ठीक अच्छे कहीं से इटली गोटे स्टेट था तार यूनिफिकेशन हो नाला बिकज चर्च बहुत दखल अंदाज होता सो ही formulated a concept called secularism ठीक अच्छे मेकियावेली बट हाँ आगुरी तुम ना जो शुणुथ हॉब्स शुणुथ आई डोंट नो तुम शुणुथ कि हॉब्स शुणुथ कि हॉब्स माने कौन कहला कि स्टेट इज अबव द ऑल माने ये जदि मेकियावेली जदि कहिछि गोटे आइडिया ऑफ स्टेट देतला हॉब्स कहला कि व्हाई स्टेट इज नेसेसरी एंड स्टेट इज अबव द रिलीजन ये सेपरेशन कथा कहतला तो वेस्टर्न मॉडल रे कोन अछि कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट था जेतल तुम लिखुछ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यस दिस इज वेरी नाइस आर्टिकल 29 and 30 मेंशन करिया को पड़िबो बिकॉज़ दीज आर वन ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द माइनॉरिटीज बुझिबा नो सच राइट्स बट हां तांको पई कोन टिके जंती यूएस रे ब्लैक रेस ना ब्लैक रेस पई किछि जिंसर तांको रिजर्वेशन दे दियंती है ना बट हां सेठी इंडिविजुअल राइट्स को बहुत वैल्यू करंती इंडिविजुअल राइट्स को बहुत वैल्यू करंती सो दिस इज अ वेरी नाइस आंसर वेस्टर्न मॉडल ठीक है द रोल ऑफ स्टेट रोल ऑफ स्टेट कौन अच्छे स्टेट इंटरवेन्स फॉर रिफॉर्म्स मुकुनी आमर है कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म माने स्टेट कैन इंटरफेयर इन योर पर्सनल स्फीयर आल्सो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल तलाक बैन बुझे अबोलिशन 2017 तापर शबरीमला इश्यू बुझे पार शबरीमला इश्यू ट्रिपल तलाक तापर मतलब हलाला ये सब जिन बैन कर देछि गवर्नमेंट बुझे पार वेस्टर्न स्ट्रिक्ट अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर्स से करते तापर एटा देखो ये लिखी पॉजिटिव अकोमोडेशन फंड एंड सपोर्ट ऑल रिलीजन्स तुम जो पिलग्रिमेज सपोर्ट दो तुम लिखिदेव इंडियन स्टेट लेवी कौन लेवी आम फी लेवी करूँ नॉट टैक्स कहीं आम कुंभमेला होगला से कौन आम कुंभमेला होगला चारधाम यात्रा हज सब्सिडी है दीज आर फंड सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजन सो इट्स ए पॉजिटिव अकोमोडेशन वेस्टर्न सेमती कॉन्सेप्ट ना आउ गोटे जिन तुम लिखिपर ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे तापर तुम लिखिपर मद्रासा को स्टेट फंड भी करे बुझीपार मद्रासा को स्टेट फंड भी करे से जिन तापर पर्सनल लॉस लिखी रिकॉग्नाइज पर्सनली लॉ ऑन रिलीजियस बेस्ड हिंदू मैरिज एक्ट सो ये जिन इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो तुम पर्सनल लॉ लिखो ना हिंदू मैरिज एक्ट होगला तापर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड होगला तांको जो शरीयत हिसाब रे फॉलो करने दि जाउची ट्रेडिशंस कहीं बट आमर कौन अच्छे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड सेम अच्छे राइट आमर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड सेम अच्छे बट जो सिविल कोड अच्छे से डिफरेंस अच्छे इट इज बिकॉज ऑफ दिस हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिम एक्ट तापर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट कौन इट इज फॉर अकोमोडेटिंग ऑल द इंटर रिलीजियस फेथ स्पेशल मैरिज एक्ट बुझीपार ये तो सब था ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम्स व्हेन दे मैरी इच अदर ना दे मैरी एज पर द स्पेशल मैरिज एक्ट बुझीपार तापर आउट ये ड्रॉबैक कौन होता इंसर्टिंग यूसीसी आमे सिना कहू कौन बीजेपी इज कम्युनल एमती कहते ना कांग्रेस सेक्युलर बट हाँ देख लो यूसीसी इज ए सेक्युलर आइडिया व्हिच इज इंसर्टेड बाय द एनडीए या बीजेपी कहि पारे बुझीपार ये कौन ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वल बट हाँ गोटे जिनस कि आर आवर पीपल ऑफ इंडिया कौन कैन अडॉप्ट दिस यूसीसी ऑल इंडिया बेसिस होनी दैट इज वाई स्टेट वाइज एबे होच स्टेट वाइज जोटी बहुत भल मेजोरिटी अच्छी से इम्प्लीमेंट कर कहीं देख गोटे जिन कि जो तुम यूसीसी आसीज ना वन ऑफ द मेन थिंग कौन जो मुस्लिम वुमेन अच्छा ऑब्वियसली पति तलाक छाड़ी दौचे 4 to 5 मैरेजेस कर दौचे ट्रिपल तलाक इज बैन बट एट द सेम टाइम मैरेज भाविल
4 to 5 marriage is also still there. So Assam जेमती कहला Assam कौन कहला ए जिनस ए 4 to 5 marriages वाला ban कर देला. तो एडा कौन strict their involvement एडा कौन positive secularism माने they are involving in the personal matters. Assam हेगला एबे उत्तराखंड रे Assam उत्तराखंड जोड़ी जोड़ी बीजेपी गवर्नमेंट अछि. सेते पे मु आउट जिनस कहि परिबी हमर जो प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल को क्रिटिसाइज भी करंदी काहे कि प्रिंसिपल एज वेल एज कोन पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल को क्रिटिसाइज करंदी एडा माइनॉरिटी अपीजमेंट भी कहंदी. स्कॉलर्स कहिसंदी इट विल लीड टू माइनॉरिटी अपीजमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ द माइनॉरिटीज काहे कि से माने तांको रिलीजियस कस्टम्स भी उलझी रहिबे सबु बेले तांको इंप्रूवमेंट कथा मिलिबो. सो से माने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करंदी. बहुत सारे स्कॉलर्स हैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज करंदी. ओके ओके तो आई थिंक आई हैव गिवन यू. हाँ देखो इट्स अ वेरी गुड आंसर. स्टेट न्यूट्रलिटी रहिबो एडा हला कि एडा सिमिलरिटीज. सो प्रकाश हैज रिटन ए वेरी फैबुलस आंसर. गोटे जिनस कोन जदी इफ यू डोंट नो द आंसर ना एटलीस्ट तुम बही देखिकी भी लेखो दैट इज आल्सो फाइन हला. बही देखिकी घंटा घंटा लेखो कहीं एटलीस्ट तुम राइटिंग ता जेमते चलुथबो. So it's a promoting religious diversity towards social justice, harmony, reform setting. एटा कौन वेस्टर्न मॉडल. तो इंडियन सेक्युलरिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न मॉडल प्लस मु कहबी सोशल जस्टिस है ना सर्वधर्म समभाव राइट. जदि आंसर जो टाइम न थबो ना ए सब जिनसे एमते लिखि देबो साइड रे लिखि देबो. हां बट हां डू कोड द आर्टिकल्स जेमते 25 रे 28 हेगला आगुरु एक्सप्लिसिटली थिला इम्प्लिसिटली थिला हैला परे ताको 42nd अमेंडमेंट रे सेक्युलर कर देले एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देले. बुझि पारछो तो एमता ठीक अछि. आई होप आई मेड सेंस. ठीक अछि. ओके एनीवेज मु ऑलरेडी तार आंसर एडी लिखि दे छला मुझे जो देवी यू कैन हैव इट. ठीक अच्छे आंसर गोटा अच्छी आ भितर. एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए एंड इंडिया. एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ नोशन ऑफ इक्वालिटी. ठीक अच्छे एक्चुअली गोटे जिनस कौन आंच जो ये सब क्वेश्चन आसो ना तुम टिके डिस्टिंग्विश फीचर केम लिख यूएसए एंड इंडिया टिके कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करदेबू. जमती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट सोशल जस्टिस राइट. So mainly social justice and economic justice candy but USA रे they always prefer USA कौन western को they always prefer individual liberty. तांको पाई more than social justice more than economic justice they prefer individual liberty. बुझे परे Rod's theory of justice आस्तला से टाइम रे 1971 आस्तला social and economic justice को ऐड करथला. मु कोइ पर भी वेस्टर्न मॉडल ऑफ इक्वालिटी कौन टिके कौन बेसी लिबर्टी को फोकस करती एंड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर जो तुम जानी थबाटा यूटिलिटेरियनिज्म रो कांसेप्ट था. बट हाँ यू डोंट नीड टू राइट ऑल दैट. बुझे पार तो ये देखी दियो मु जस्ट तुम पे आंसर फ्रेम करची. देखो 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 equality is a foundational constitutional value in both India and US emphasize formal equality and individual liberty. ठीक अछि. लिबर्टी माने कोन लिबर्टी माने हला तमे चॉइसेस को बढ़ेबा रेस्ट्रिक्शंस को घटेबा. बुझि पाछ ता माने हला से फ्रीडम तो गोटे जेनेरिक टर्म ता एक्चुअल मीनिंग है चॉइसेस को बढ़ेबा एंड फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करबा. ओके ओके कार नेटवर्क प्रॉब्लम हो मोर नेटवर्क प्रॉब्लम हो कि मोर ये वर्षा तो ना कटक तो वर्षा नहीं आज बट हाँ पाग टे खराब अच्छे तुम वर्षा हो यू कैन अनम्यूट. ओके व्हेन यू वांट टू टॉक यू कैन अनम्यूट. ओके ठीक अच्छे. तो एठी कौन दे देख गोटे जिनस है कि तुम जो अरिस्टोटल मुझे बी आर अम्बेडकर जिन कोट कर जो अरिस्टोटल प्रभाव माने कौन माने वेस्टर्न ऊपर बहुत पड़ी कौन लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक. एटा तुम शुणी थो बुझी पाठ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक. कहीं जो तुम जानी थो जो रिजर्वेशन भी दौच ना रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द कौन
कास्ट बेसिस रे due to the historical injustice general category and other caste category general OBC hegala and other SC ST they are not treated equally because of the historical injustice. So we are correcting our injustice. Sethipai kon like should be treated alike and unlike should be treated unlike. So gote out quote achi ki BR Ambedkar gote jinsa equality among equals is a fundamental principle while equality amongst unequal leads to justice. mu sei jinsa kochi tome jodi ki mane gote historically injustice loko ko आउ गोटे प्रिविलेज लोक को जदि तुम इक्वली रखीदेव एंड सांगे इक्वली ट्रीट कर ना इट लीड्स टू इनजस्टिस गोटे अनप्रिविलेज टका एंड गोटे प्रिविलेज टका को तुम केबे भी इक्वली करि परिबो नै सेटा बीआर अंबेडकर कहते सो यू कैन यूज दिस कोड व्हाइल राइटिंग सच आंसर्स ओके सेटा को आंसर आउरी भलो फ्रेम हे परिबो त एटा देखो यूएसए कौन करला डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट 1777 तांको पाइन थिला ऑल मेन आर इक्वल थिला से टाइम रे रूल ऑफ से माने रूल ऑफ मेन रूल ऑफ लॉ को गले बुझि पाछ हमर प्रिएम्बल कोन जस्टिस इक्वालिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एडा कोन हमर ऑब्जेक्टिव काहे वी हैव टू अचीव दिस स्टेटस जस्टिस इक्वालिटी तापरे लिबर्टी जस्टिस जेएलएफ जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी fraternity these are our objectives है ना these are our objectives तापरे ताकर मेंशन कोडे इक्वल देखो एडा मु जानि तुम मन रखि पारे नै बट हां इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉ एडा ताकर अमेंडमेंट रे एडा मेंशन हेछि बट हां जेतला हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे जानि छु कोन आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी बिफोर लॉ तापरे पार्ट 14 डीपीएसपी रे बहुत सारे इक्वालिटी कांसेप्ट अछि टू प्रमोट सोशल जस्टिस कोन हेछि 13b and 39c are always favored over are always over 1419 बुझि पाछो ए एग्जांपल ता तुमको लिखिया पड़िबो बुझि पाछो हमर सोशल जस्टिस को बहुत प्राधान्य काहे कि इट प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कोन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस सो फॉर द पर्पस टू सबसर्व द कॉमन गुड को सबसर्व करिया पे तुम डिस्ट्रीब्यूट की माने कोन इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली करो बुझी पार तो एटा एक पॉइंट जोड़ा तुम लिखि पारिबो तापर देखो डिस्टिंग्विश फीचर्स कोन अछि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ हमर कोन इक्वल ट्रीटमेंट प्लस अफर्मेटिव एक्शन सेति पई हमर कोन अछि रिजर्वेशन दिया जाउछि दिस इज एन अफर्मेटिव एक्शन काहे हमर कोन पॉजिटिव अफर्मेशन चलछि हमर ताकर नेगेटिव अफर्मेशन स्टेट हैज टू इंटरफेयर टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी तब एटी कोन एटी स्टेट concept negative माने state should not discriminate but एटी कोन positive concept state can take special measures to reduce inequalities सेति पे तुम जानतो फर्स्ट कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट एक्ट तापरे 31C बुझि बात 31C एडा सब आउतरे आर्टिकल 15 रो बहुत सारा अमेंडमेंट हेछि 16 रो भी अमेंडमेंट हेछि बुझि पाछो यू कैन राइट सच एन एग्जांपल्स काहे कि कोटा सिस्टम भारतला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कोन थला चंपाकम दोराई राजन केस काहे से मद्रास प्रेसिडेंट्स को जाइतला काहे सेठी कोन वेलफेयर मेजर्स को फॉलो करा जाउतला तो सेठी कोन मैं स्टेट रो कोन रोजी स्टेट इज टेकिंग सम मेजर्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज तापरे मुकोन एडी इंडिविजुअल राइट्स माने लिबर्टी को बहुत प्राधान्य जाउछ एडी कोन इंडिविजुअल प्लस ग्रुप राइट्स बुझि पाछो तापरे हां ईडब्ल्यूएस भी अछि एडा भी जानथो तो आमर कोन कि इट्स लाइक मु कहबे मोर ओवर इट्स अ ग्रुप राइट बुझि पाठ काहे ड्यू टू आमर देखो एक तो कास्ट सिस्टम थिला ऊपर से कोन थिला हमरो ब्रिटिश रूल 200 इयर्स लेगेसी थिला ता पूर्व कोन था मुगल्स थिले सो वी वर ऑलवेज सबड्यूटेड फॉर 1000 इयर्स तो सेमिति कोन एक तो हमरो डिग्रेडेशन भी हे जे प्लस कास्टिज्म भी प्रिवेलेंट होछ तापर इक्वालिटी मेनली थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज 14th अमेंडमेंट हां सेडी इक्वल प्रोटेक्शन भी अछि सेडी मैक्सिमम इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रेफरेंस दियंती बट हां हमरो सेडी इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज को भी तमन अकोमोडेट कर छले तो एडी कोन आर्टिकल 14 टू 18 दिस डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज राइट व्हेन सच क्वेश्चंस आर तुम टिके गोटे तको फाळे करी तुम लेखा स्टार्ट करियो ठीक अछि रिजर्वेशन जनरली आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड बट हां स्पेशल प्रोविजंस फॉर द ब्लैक रेसेस पे सेडी स्पेशल प्रोविजंस अच्छी सेटी बुझि पाछ तो ओके इट्स सिमिलर टू ईडब्ल्यूएस कहले भी सेट चले बुझि पाछ एटे टिके जिंस देजे तुमको जोडा कि
मन रखा कोड कर दो कहीं कल मे बी इट कैन बी रिपीट दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन द टुमोरोज एग्जाम ठीक अच्छे तो यहाँ सपोज इफ आई रैंडमली मोटे चेक करुँचे ओके कारण विघ्नेश्वर equality is a fundamental principle in both the US and Indian constitution ठीक अच्छी however the American concept is rooted in liberal individualism and negative rights ठीक अच्छी while the Indian concept is rooted in social justice and positive discrimination to add a history ठीक अच्छे this is a very perfect nice answer you can introduction तुम एमडी भी स्टार्ट कर परियो ठीक अच्छे तापर आउट कथा लगे तुम जदि माने आर्टिकल कोड करियो ना साइड रे कोड भी कर दबो कौन कौन आर्टिकल दिया जाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 31C, Article 15 clause 5, 6, 16 clause 6, these are the amendments. बुझी पाच जोड़ा कि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को ठीक करिया पे लिखा है तो यूएस रे कोन अछि फॉर्मल इक्वालिटी अछि तपर इंडिया रे कोन सब्सटेंशियल इक्वालिटी ठीक अछि दिस इज आल्सो गुड आंसर देखो गोटे जिंस लाके जानसो तमे जदी देखि के लिखुछ देन देखि के भी लिखो ओके किछि प्रॉब्लम नै at the end you will have to write मु जानि छी बसिकरी घंटे लिखिबा बहुत मुश्किल without seeing anything but हाँ if you want to write by saying then you also write either किछि प्रॉब्लम नै it will also improve your writing speed and also thought also कहीं तुम अडा बडा नुवा नुवा जिंस लिखुछ ना and something will go in your mind बुझी पाछ हाँ 8 जम देछि आर्टिकल 15 5 तपर कोन इक्वालिटी एटा यूएस कोन सिविल एंड पॉलिटिकल डज नॉट एक्सप्लेन मेंशन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बट इट्स देखो गोटे जिंस लाके एटी तुम लिखिबो कि तांकर सब बेले लिबरल प्रिंसिपल को से माने फोकस करत यू डोंट नीड टू मेंशन एनी मच मोर बट हाँ तुम लिबर्टी को मेंशन ही करिवो सेठी इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत फोकस करा जाय छे यू हैव टू मेंशन दैट स्कोप ठीक अछि आउट तपर आउट अछि कि तपर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर यू डोंट नीड टू कोड रोल्स थ्योरी बट हाँ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर से कोड करती पर से डिग्निटी को भी आणले डिग्निटी जो माने माने ह्यूमन डिग्निटी की जो ह्यूमन डिग्निटी जो न था कौन पॉलिसी रे से पर इनसर्ट भी कले कांतियन डिग्निटी तो कहती बट हाँ दिस इज राइट एमती लिखले कहीं जीएस पेपरटा ना तो यू कैन राइट लाइक दिस तापर रोल ऑफ स्टेट इज अ नाइट वॉचमैन एटा कौन है एटा डॉर्किन स्टेटमेंट एटा स्टेट इज अ नाइट वॉच इट प्लेज अ पैसिव रोल इट मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट दिस इज अ नेगेटिव इक्वालिटी ठीक अच्छे ठीक है नाइट वॉचमैन लिखले भी चलो स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट कहीं आम डीपीएसपी रे मेंशन करा जाय छै डीपीएसपी रे मेंशन करा जाय छै जुडिशियल इंटरवेंशन ठीक अछि स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी एंड कलर ब्लाइंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लेसी वाज अ फर्गुसन सेपरेटेड बट इक्वल वाज अपहेल्ड लेटर ओवरटर्न इन ब्राउन ठीक अछि एटा न लिखले भी चलिबो ओके न लिखले भी चलिबो बट हां सेठी सुप्रीम कोर्ट रा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थाय कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द लिबर्टी बुझी पाछ आवर इंडियन सुप्रीम कोर्ट बेसी लिबर्टी फोकस करिबो इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज बिट फोकस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द लॉ कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ अछि ना मोर मेरिट ऑफ द लॉ कंटेंट ऑफ द लॉ को चेक करंती तापर प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स ओके नो सच प्रोविजंस फोकस ऑन इंडिविजुअल मेरिट abolishes untouchability ठीक अछि दिस आल्सो अ गुड आंसर ओके एनीवेज ठीक है द आंसर इज परफेक्टली फाइन एमती आंसर तुम लिखि पारिबो ओके समस्त तो कॉपी दे छंती ना आउ के देना तुम यू कैन इंसर्ट हियर आई विल चेक हियर आल्सो देखो व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी एसटीज ठीक अछि देखो ए सब क्वेश्चन ना मैक्सिमम तुम 1.5 पेज लिखिक सार दबो हैला 1.5 पेज रे बेसी जीवनी कहीं टू मेजर लीगल इनिशिएटिव कहै से इनिशिएटिव को तुम कौन करिवो ताको बसी के एक्सपेंड करिवो कहीं खाता किछि तो जिंस देखियाबार अछि जे तुम बेसी एक्सपेंड करूथबो ना गला लास्ट 2-3 क्वेश्चन जेतले पळेबो 15 मार्क दितले 2-3 क्वेश्चन पळेबो then you will face a problem or start from the 15 marks itself ठीक अछि आमे ए प्रॉब्लम फेस करछ बोली कहूछ 15 मार्क्स to start कले बेटर होंदा बट प्रॉब्लम हैला कि जब तुम 15 मार्क्स स्टार्ट करिवो जेतले तुम पर 10 मार्क्स को आसी जायथबो 10 मार्क्स जेतले अटेंड करिवो ना माइट भी तुमर हैंड राइटिंग टिके प्रॉब्लमेटिक हे पारे तो मु जेतले सजेस्ट करिवो ना जेतले 10 मार्क्स स्टार्ट करछ ना एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स कहीं से तुम हैंड राइटिंग ठीक थबो माइंड भी स्टेबल थबो पर 2टा क्वेश्चन पर 15 मार्क क्वेश्चन अटेंड कर दियो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा रोच ना बुझी पालो एट फर्स्ट एटलीस्ट अटेंड 10 2 मार्क्स देन यू गो फॉर द 15 मार्क्स
एनीवेज मु बेसिक डिस्कस करिबनी ए क्वेश्चन टा कोन थिता व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस काहे obviously constitution of India guarantees equality and protection to scheduled tribes under article 15 16 20 244 342 काहे to correct the historical injustice ठीक अछि हमर एटा आसला कोन SC ST Act 1989 एटा गोटे एक्ट आसला आ गोटे कोन आसला प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट मन अछि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आसला सेटा गोटे एक्ट आसला हां ए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी से जिंस ही कोन बुझि पाछ तापर मु गोटे जिंस कहबी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन अछि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोन करथले एनसी एससी एंड एनसी एसटी को बाइफर्केट कर देथिले आको 338 ए कर देथिले एंड तार कोन अछि तार कोन तार पावर्स को रेगुलेट पावर्स को बढ़ाई देथिले बुझि पाछ ए अमेंडमेंट तो तुम लिखिबो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तापर की फीचर्स कोन punishes caste tribe based violence humiliation and social boycott obviously आज भी किसी जगह social boycott हुए ठीक अछि बट हाँ स्टेट को है तुम एटलिस्ट पंचायत रो सॉल्व करो कहीं ए सब जिंस कोन सोशल बॉयकॉट इज लाइक कोन स्टिल द पीपल आर इन बिट स्टोन एजेस पंचायत रे जदी गोटे भलो लोक थिले ही कैन सॉल्व सेति में पंचायत राज ऊपर बहुत फोकस करा जाउछ स्पेशल कोर्ट्स एंड ऑल दैट तापर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहीं दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग लाइक कहीं बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट ताको लाइवलीहुड चले आकु सपोर्ट करा पे कोन अछि हमर पैसा एक्ट अछि राइट पैसा एक्ट अछि इंप्लीमेंटेशन ऑफ पैसा एक्ट ओवर हिंड्रेंस अछि बट हां यू हैव टू राइट पैसा एक्ट तापर 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज 6 शेड्यूल एरियाज को बहुत सारा राइट देछन कहीं से मेजरली एससी एंड एसटी थांते राइट तांको पई निजर लॉ कस्टम्स पई माने स्पेशल ट्राइबल काउंसिल अछि सेडा भी तमे लिखि पारिबो चाहेले स्पेशल ट्राइबल काउंसिल इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट आमे जानतो 5th शेड्यूल एरिया रे बहुत सारा स्टेट अछि अराउंड 17 स्टेट्स पदे एंड किछि जगह रे सेम 6 शेड्यूल वाला प्रावधान अछि 5th शेड्यूल रे किछि डिस्ट्रिक्ट कोइ परिबे किछि जगह रे भी कोइ परिबे जेमदी हमर कोरापुट मलकानगिरी 5th शेड्यूल एरियास आसे 6th शेड्यूल जानछु कोन एटीएम मनी आसाम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम 6th शेड्यूल एरियास बुझि पाछ सेटी स्पेशल ट्राइबल काउंसिल था सो तो दिस आर वन ऑफ द कोन most of the legal initiatives by the state to safeguard their traditional rights so please write all these things let me check the chinmay khata also jodi selection jodi okay it dekha the two major legal initiatives enacted by the state since independence to address discrimination and historical injustice against ST का prevention ठीक अछि this is 1981 okay गोटे जिनस जानछ जतल तुम 1989 लिखु छ ना जो मेजॉरिटी ऑफ जो चेकर थबो ना से सब बेले 1989 ही पढु थबो 1989 ही पढु थबो सब बेले बुझि पारछ से सब खाता 1989 कोन तमे करि परिबो जोडा के टिके हटके हेतबो this is also good traditional for Dwellers Act 2006 बुझि पारछ ओके A60 Act कोन दे prevent कोन preserving dignity criminalizing targeted exploitations institutional support stringent judicial measures ठीक अछि तापर criminalizing targeted exploitation कोन it defines and penalizes special atrocities against STs आ गोटे जिंस मझे गोटे बिल आसला आई डोंट नो रिमेंबर द बिल जते यूनिवर्सिटी रे जो डिस्क्रिमिनेशन होछि ताकू ने किछि बिल आसला यू कैन राइट दैट आल्सो बट हां ताकू कोन टेकन बैक कर देछन्ते दे हैव टेकन बैक बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरवेंशन हला यू कैन राइट दैट आल्सो सेटा गोटे स्टेप थिला गवर्नमेंट okay okay this is good special courts and speedy trials it denies anticipatory bails to the accused to prevent intimidation of victims huh this is a very important point and it denies anticipatory bails माने SC ST एक्ट जो बुक है जो तुमको बेल मिले बहुत कष्ट हो जाए राइट बट हाँ तार मिसयूज भी होए किछ जगह मिसयूज भी होए एटा तार ड्रॉबैक हेगला तापर इट लीगलाइजेस मैंडेटरी रिलीफ फाइनेंशियल कंपेंसेशन गोटे जिनस होला कि तमे गोटे जिनस कहबो तमे तो लीगल प्रोविजंस तो लिखला तापर एग्जांपल भी कोन कोन दे परिबो आ कोन मु कहि परिबी तांकर
तांको सोशल स्टेटस इंक्रीज करा पे स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम आस्तला से टाइम रे एमएसएमई स्कीम रे तुमको सब्सिडी दिया जाए बुझी पारछो एटा भी तुम लिखि पारिबो चाहिले कहीं तुमको डायरेक्ट पॉइंट के हिट करि पारछ फॉरेन डुलेस एक्ट 2006 ठीक अछि रिसीव लीगल वर्शिप एक्ट हम ओडिसा रे भी लिखि देबो ओडिसा रे एग्जांपल दे देबो ठीक अछि कहीं हम जो केंदू केंदू लीव्स को हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पाई गवर्नमेंट सब्सिडी गवर्नमेंट कोन दोछि कोन एमएसपी भी दोछि कहीं ताको के प्रोड्यूस करन ताको मोस्टली द ट्राइबल्स बुझी पाछो तो केंदू लीफ पाई से माने गवर्नमेंट प्रोक्योर भी करे सब्सिडी भी दियंती बुझी पाछो सेटा भी तुम लिखो हां या फॉरेस्ट प्रोड्यूसर तुम एडा लिखो या कम्युनिटी राइट्स यू कैन राइट दिस ठीक अछि लाइक तेन हां एट तो लिखछो हनी भी आको कोन एमएसपी दियंती प्रोडक्ट ट्राइबल इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड्स ठीक अछि Democratic decentralization. It empowers the Gram Sabha as the primary statutory authority to initiate the process of determining forest right. ठीक है. Overall, it's a good answer. And enshrine the Article 46 of the Constitution. ठीक है. तब आउट जिनस कोई परिबे कि जेतले तमे मु एटा गोटे जिनस कोई परिबे जेतले बहुत जगह जो यूसीसी आछि ना तो मेजॉरिटी ऑफ द एसटी ट्राइब्स हैव बीन कोन exempted एटा तो लिखि पारियो एडा गोटे स्टेप हे गला स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कल्चर ट्रेडिशंस ऑफ द ट्राइब्स यूसीसी से हमको ऐड भी करना थे सो इट्स अ वेरी न्यू पॉइंट यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स आल्सो ठीक अछि सो एडा कोन तमरा आंसर आउरी टिके बहुत भलो हे जाय ठीक अछि सर हां रिसेंटली रूलिंग आस्तला यस ठीक है तो आमर कोन के मेनली एटा डिस्कशन एटा ओके सो दैट आई मीन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ यू कैन टॉक आल्सो सो दैट वी कैन आमे कोन एटलीस्ट भलो आंसर लिखि पारिया ना जितले इफ यू डू डिस्कशन डेलिब्रेशन ना सेते पाइन तो पार्लियामेंट्री डिबेट हुए डिस्कशन डेलिब्रेशंस हुए नले आंसर भलो कोड आसीबो एनीवेज तो एडा कोड हेला तो सेकंड क्वेश्चन हैला let me change the pen color first explain the rationale behind establishing the Rajya Sabha as the upper house of parliament ठीक अछि this is a very good question माने एटा कोन कि टिके बोरिंग लागिवो बट हां तुमको एट द सेम टाइम तुम लिखि भी पारियो एटा करो एटा कियोडा सेंड करला नाटा नथिला तंकर बट हां लेट मी सी दिस केम द लेक्चर हेडी देखो जे लिखछन दे The Rajya Sabha was formed as the upper house of parliament to strengthen the federal system in India and protect the interest of the states. ठीक अछि it's a very good answer ठीक है जदी कोई भी I mean it has been formulated on the basis of Westminster model of UK ठीक अछि काहे सेडी भी दीडा चैम्बर थिला हमर भी दीडा चैम्बर को इंप्लीमेंट करले ठीक अछि upper house of the parliament आउट तापर देखिया से आ कोन लिखछन दे okay Rajya Sabha it's not a states representation checks bills and permanent गोटे जिंस लाकी Rajya Sabha it's all about देखो लोक सभा रो कोन थिला कि से एडी कोन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करछन किंतु Rajya Sabha हला कि कोन टोटल Rajya Sabha गोटे एमपी फ्रॉम Rajya Sabha it represent the whole state बुझिबो सेति पे तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन कोन दे हमर केते हमर ओडिसा रे Rajya Sabha के 10टा ना 10टा बजे अछि ना 11टा अछि तो जो 10टा एमपी ओडिसा रे बसिबे पार्लियामेंट रे बसिबे दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द होल ओडिसा 31 एमपी फ्रॉम द यूपी दे विल रिप्रेजेंटिंग द होल यूपी बुझि पाटो सो एटी कोन स्टेट रे काई लोकसभा एति पे आसला काई एक तो सेंटर स्टेबिलिटी दरकार ऊपर से दे ऑलवेज कोन रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपर लेवल रे स्टेट्स और वॉइस टा अनहर्ड न हो सेति पे कोन राज्य सभा रे इंपोर्टेंस आसी जाई ला सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट द स्टेट मुद्दा बुझि पे आ गोटे जिंस लागी राज्यसभा कोन करे व्हाट मिनट हां एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड
ठीक अच्छे गोटे कौन आउ गोटे कहते कौन राज्यसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ एल्डर्स कहीं हाउस ऑफ एल्डर्स कहते कहीं सेठी लिटरेरी आर्ट्स सोशल सर्विस साइंस रु आसंती है कहीं दे आर एमिनेंट पर्सनालिटीज हु कैन कंट्रीब्यूट जिते कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी जिते ना कौन होता आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चलता है ना डिबेट चलता कि आम साइंटिस्ट फील्ड रु आनिबा साइंटिस्ट फील्ड रु आम नॉमिनेशन दबा किंतु सेटा एक्चुअली आगु को साइंस हो गला ठीक अच्छे कहीं साइंटिस्ट आर ऑलवेज इक्विप्ड फॉर दैट कौन रिसर्च स्कॉलर रिसर्च था मे बी दे कैन पुट सम वैल्यूएबल पॉइंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आ गोटे कथा राज्यसभा एथि आसला कहीं इट इज आपको कहते द हाउस ऑफ लूजर्स भी कहते दोज पीपल हु कैनॉट विन डायरेक्ट इलेक्शन जो जीति पारे इनडायरेक्टली वे थ्रू आसबे फ्रॉम द स्टेट रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट वे आसबे सो इट कैन बी टर्म्ड एज कौन हाउस ऑफ एल्डर्स कही पारे कहीं एंड वी आर ट्राइंग टू कौन यूज देयर एक्सपर्टीज बुझीपार ये जिनसा तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स ठीक अच्छे ओडिशा एमपी कैन रेज द प्रॉब्लम्स ऑफ ओडिशा ओके ठीक अच्छे एवं मझे इलेक्शंस भी होता तो इट इज वेरी ठीक अच्छे फेडरल सिस्टम इट मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर स्टेट ओपिनियन इज टेकन इन लॉस रिलेटिंग टू ठीक अच्छे तब आउ गोटे जिनस है कि आम लिखिपर राज्यसभा फॉर्मुलेट्स फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज ठीक अच्छे तपर सेंट्रल सर्विसेज ठीक अच्छे स्टेट्स जदि स्टेट्स और सेंटर जदि आउरी किसी इंप्रूवमेंट अच्छे दे कैन फॉर्मुलेट कहीं मझे डिमांड होता कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज में डिमांड आसला राज्यसभा शुड मेक एन ओपिनियन मेक एन कौन गोटे गोटे बिल अणु इंडियन जुडिशियल सर्विसेज में सो दैट जमी आईएएस आईपीएस सिलेक्ट होते आम जुडिशियरी भी टिके मोर कौन फॉर्मुलाइज्ड वे सिलेक्शन हो पार से डिमांड उठी सो फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेट सर्विसेज बुझीपार से कंट्रोल ओवर लोकसभा इट प्रिवेंट्स द रॉन्ग डिसीजन ए बिल कैन बी सेंड फॉर द रिकंसिडरेशन ठीक अच्छे कंट्रोल ओवर लोकसभा ओके कहीं ये बेसी डिस्कशन डेलिब्रेशन हुए ना डेलिब्रेशन डिस्कशन हुए तब मु गोटे कथा कहबी ऑर्डिनरी बिल रे कौन हुए जदि किसी रॉन्ग बिल थबो ना ताको राज्यसभा ब्लॉक कर दबो बट हाँ राज्यसभा को बाईपास करबा को हेले कौन तार माने कौन ड्रॉबैक कौन मनी बिल रे कौन हेबो इट्स अ ड्रॉबैक जेंत आधार को मनी बिल करी पास कर देथिले कहीं जो एनडीए 1.0 था ना से राज्यसभा मेजोरिटी नथिला बुझिपा दैट वाज अ ड्रॉबैक बुझिपा तब आउ गोटे जिनस है कि पोटा मतलब पोटा एक्ट आसला 2002 रे इट वाज पास बहुत कष्ट पास होता बुझीपार माने तापे जॉइंट सेटिंग रही जाता तो बहुत डिस्कशन डेलिब्रेशन हैला परे बिल रे चेंजेस आसला पर सेटा पास हैला कहीं पोटा वाज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 20 जो प्रोहिबिट सेल्फ विटनेसिंग था ना सेल्फ विटनेसिंग की जो प्रोहिबिट करते ना पोटा वाज एन एक्सेप्शन जो तुम विटनेस तुम टेररिस्ट एक्ट पकड़ा जाइछ एंड तुम कन्फेस भी कर देला ना यू विल डायरेक्टली गो टू द जेल एडमिसिबल एविडेंस नेउतले विथ सेल्फ विटनेसिंग रो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स कौन एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स इज सोट पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर नॉमिनेटेड गोटे जिनस कौन जो ये जिन सब लिख ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स लिख ना तुम गोटे जिनस लिख कि ड्रॉबैक रे लिखिदेव ड्रॉबैक रे आउ गोटे जिनस लिखिदेव right now the house of I mean Rajya Sabha was formulated for the house of elders but today at the current scenario Lok Sabha and Rajya Sabha रे माने एज डिफरेंस एते भी नहीं इट्स ऑलमोस्ट सेम ठीक अच्छे ऑलमोस्ट सेम ठीक अच्छे तापर Rajya Sabha is never dissolved ठीक अच्छे Rajya Sabha continues to function even if Lok Sabha dissolved ठीक अच्छे एटा ओटा तांगर फीचर हे गला आ गोटे कहि परिबी तार गोटे आउ गोटे ड्रॉबैक कहि परिबी अननेसेसरी डिलेस हम से सैलिसबरी डॉक्ट्रिन यूज करबा कहते जदि गोटे जिनस अच्छे लोकसभा रे डिस्कशन डेलिब्रेशन करी गोटे बिल पास हो जाए राज्यसभा तुम कहीं अटकब यूके रे गोटे यूज है सैलिसबरी डॉक्ट्रिन ताको राज्यसभा रे गोटे 2 दिन भीतर पास कर दिया बट हाँ तुम से जिनसटा जब तो नेगेटिव एक्सपेक्ट तुम लिखिपार अननेसेसरी डिलेस भी हुए ओके राज्यसभा हेल्प्स इन मेकिंग फेडरल सिस्टम मेकिंग गुड लॉस ठीक अच्छे बट आर टी कंक्लूजन पार्ट मिसिंग अच्छी है ना बुझीपार तो सेटा भी तुम लिखिपार मुझे आंसर फॉर्मुलेट कर देछि देखो ये देखो ये तो मुझे
has to brute majority, check the brute majority and all that. Article 80 को mention भी करछि, all India rubber stamps, it's not a mere rubber stamps. बुझिपारछ, the Rajya Sabha embodies the constitutional idea of federalism, deliberative democracy, institutional continuity. Is House of States, it complements, not competes with Lok Sabha by ensuring the legislation both representative and well considered. Out जिनसो लागे कि GST, okay, you don't need to mention GST also, ठीक है, दरकार नहीं, बेसी माने बहुत complicated है जो, anyways, ठीक है, overall the answer was good. Anyways, let's enter into the 15 marker question. Recent events suggest growing friction among the three organs of the state. Critically examine whether the balance of the powers under the Indian Constitution is under strain. एटा गोटे जिनस कौन दबार जानछ, एटा गोटे जिनस हला कि इट्स ऑलवेज द फ्रिक्शन बिटवीन कौन सेंटर एंड स्टेट. मैक्सिमम फ्रिक्शन सब सेंटर एंड स्टेट हुए, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर संगे हुए, प्रेसिडेंट तो हुए नहीं बट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर हुए. आउ ये तो फिजिकल मैटर बहुत प्रॉब्लम हुए, प्रॉब्लमैटिक थाए एटा सब. आउ गोटे जिनस हला कि जेतल तुम सपोज एमता क्वेश्चन जदि नो आसे, जेतल कहबो कि सेपरेशन ऑफ पावर ऊपर जदि क्वेश्चन आसले ना, तुम लिखि गोटे कोर्ट लिखिबे मोंटेस्क्यू ने कि कोर्ट करि परियो, मोंटेस्क्यू है ना, बीडी मोंटेस्क्यू से गोटे जिनस देतला स्पिरिट ऑफ पावर. स्पिरिट ऑफ पावर देखो, जेहेतु आंसर डिफरेंट लिखिबार अछि, जदि आंसर डिफरेंट लिखिबार अछि, यू हैव टू स्कोर एक्स्ट्रा 1 to 2 मार्क्स, देन तुम आंसर भी डिफरेंट लिखो. बुझि पाछो, सेमिति तो समस्त लिखिबे जो तुम मोंटेस्क्यू माने माने लिखिदा, ही वाज अ थिंकर हु गेव द सेपरेशन ऑफ पावर इन 1748. बुझा ता बही ना से स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉस बही ना स्पिरिट ऑफ लॉस ता भितरे सेपरेशन ऑफ पावर देतला काहे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को सेपरेट करिया पड़िबो. इट प्रिवेंट्स द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव सो दैट एग्जीक्यूटिव कैन बी चेक्ड. ए जिनसर से कहतला एंड इंडिविजुअल लिबर्टी कैन नॉट बी सप्रेस्ड. ओके, तो ये सब जिनस के इलेक्शन प्रकाश. ओके, लेट मी टेक सम रेंडर. ओके, ठीक है. Okay, say question skip page actually. Okay, let me see one of the answers. Okay, explain the rationale behind establishing the Rajya Sabha. As per the Sarkari Commission 1980, Rajya Sabha is a vital organ for federal equilibrium, truly federal, upper house with equal representation for Israel. It's a good answer. Thank you. तुम डायरेक्ट सरकारी कमीशन को मेंशन कर देचो, ठीक है. तो जेहेतु तुम सरकारी कमीशन को मेंशन कर देचो, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मे नॉट मेंशन इट. दे विल स्टार्ट फ्रॉम द राज्य सभा इटसेल्फ. कोई बेल राज्य सभा इज द अपर हाउस, अपर चैम्बर ऑफ द हाउस, परमानेंट हाउस, सेम द जिनस लिखते तुम ये लिखि दो सरकारी कमीशन कौन रेकमेंड करथिला. इट्स अ वाइटल ऑर्गन ऑफ फॉर फेडरल इक्विलिब्रियम. काहे कि सेठी स्टेट रिप्रेजेंटेशन आस्टी. ओ सॉरी, कोडी पर राज्य सभा पड़ाइल, सॉरी. ओके, एनीवेज ठीक अच्छे, से ग्रुप 5 लिखा है, ठीक अच्छे. तुम ये देख recent events suggesting growing friction among three organs of the state. The Indian Constitution does not prescribe a rigid separation of powers like United States, but explains a system of checks and balances among the legislature, executive, and judiciary. Gote jinso laki why we didn't went for the rigid separation. Rigid separation kahingi golnu because jodi rigid separation ame nei thantu hela. Suppose USA रे कौन अच्छे सेठी presidential system अच्छे. Presidential system can make a कौन personality cult. काहे कि their president is not answerable to the Senate. Their president is not answerable to Senate. He can make laws. बुझी पारछो. तो मैं हाँ किछि टाइम रे प्रॉब्लम हुए, बट एट द सेम टाइम ओके हाँ
बट हाँ से प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं नथलो कहीं आमर पार्लियामेंट्री फॉर्म रे कौन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ऑलवेज चेक्स ईच अदर ठीक अच्छे अंबेडकर साहब कौन कहते देर कैन बी नो रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं मझे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कहते माने कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट होता आई थिंक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करदे बट कहीं जेहेतु आम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम आसचु दो ब्रिटिश अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म बट स्टिल जो राज थिला ना इट वाज अ ब्रिटिश राज बुझीपार जेहेतु आमर इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस कर देते फ्रीडम किसी नाला से आउ एमती जिनस न हो से चेक्स एंड बैलेंसेस आसी जाओ बुझीपार भाविले जदि पार्लियामेंट पाखे चेक्स एंड बैलेंसेस नथिला मन इच्छा करेंगे मन इच्छा से करदे से कहले कि नाइ वी शुड फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम दो आमर कॉलोनियल लिगेसी अच्छी टिके कम करने एटलिस्ट चेक्स एंड बैलेंस रहा जरूरी नहले तुम भाभी था जदि जवाहरलाल नेहरू से तुम पर्सनाली कार्ड लगुच भाविले जदि प्रेसिडेंशियल होता ना नाँ आहरी उठी जाता भाविले जदि आजिका डेट्रे जदि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता एंड मोदी जी था पार्लियामेंट कहीं जाते ही डजंट नीड टू गो टू पार्लियामेंट एवरी टाइम एटलीस्ट मॉनसून सेशन होगा विंटर सेशन होगा ही गोज देयर एंड एंड आंसर्स दियंती पार्लियामेंट रे प्रेसिडेंट को दबार नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम रे आंसर किसी दबार नहीं बुझीपार से तो डोनाल्ड ट्रम्प जमती सी तार डिफेंस सेक्रेटरी या पेट्रोलियम मिनिस्टर सब कौन माने माने सेमता लोक चूज करती जे पार्लियामेंट रे बसंती से बाहर चूज करती पीट हेक्सेट होगला आ जो पेट्रोल मिनिस्टर अच्छे ना सी ऑयल कंपनी मालिक सी तुम भाविल जदि कैन यू थिंक some Adani Ambani can be can Modi can nominate them जदि भी तंगु nominate करिवो ना they have to come through Rajya Sabha they have to face the election at least indirect election presidential system is सब जिनस नाही you can appoint your own ministers सेति पे एडी कोन लिखा छै executive and judiciary tensions recent example कोन थिला कि recent example supreme court कोन कहतला gave directions regarding governor assent माने कौन देखो आमर आमर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी भी सेपरेशंस अच्छी किंतु जुडिशियरी कौन कला कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को टाइम लिमिट दे देला तमे टाइम तमे जो असेंट यू हैव टू गिव द असेंट ना बिल को तुमको असेंट करिवार अछि विद इन सर्टेन टाइम लिमिट परे ताको प्रेसिडेंट कौन कला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नै कि ताको पचारला आर यू ऑथराइज्ड टू गिव मी सच टाइम लिमिट सेटा गोटे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी टेंशन मझे थिला बुझीपार आ गोटे डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट अंडर द कॉलेजियन सिस्टम मु गोटे जिनस कह सुप्रीम कोर्ट रो जो जजेस अच्छे ना दे कैन टेक पंगा विथ कौन एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा टिके नहीं पारे तुमको लगुच हाईकोर्ट जज जी अच्छा हाईकोर्ट जो जज अच्छा या हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा ने Do you think High Court judge will take पंगा with central government? They cannot. जदि भी नेबे कौन हबो देखो every High Court judge ना aspire to become judge of Supreme Court आ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हवा को हेले कौन अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो जीवो किए लॉ मिनिस्ट्री अपॉइंट करिवो तमे हाई कोर्ट पे तमे तमरो फाइल पठेतबो लॉ मिनिस्ट्री पे हे टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैला सपोज तमरो एज अछि 61 इयर्स अछि 61 इयर्स अछि तमरो एज अछि ठीक अछि वर्ष हेला तुम पठे देछ लेट मी आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन हियर ठीक अछि तमरो एज अछि 61 इयर्स हाई कोर्ट जज अछि तमे फाइल पठेलो आई वांट टू बिकम कोन सुप्रीम कोर्ट जज ठीक अछि एंड तमे जानि छ तमे सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट कोन देतला जजमेंट देतला तापर 61 वर्ष हेलान तमे फाइल पेंडिंग अछि कैन यू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज आफ्टर हिटिंग 62 बुझि परछो आफ्टर हिटिंग 62 कैन यू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज काहे कि तुम सेडे रिटायर हो जाओ बुझि परछो एठी कोन दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस एटा तो कॉलेज सिस्टम को एटा मु हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट कथा कहते सो सिटी टेंशन थाए सुप्रीम कोर्ट कौन कहे सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन करे से माने दे विल इंटरफेयर इन द बिल्स बुझे पर दे विल इंटरफेयर इन द बिल्स जे एनजेसी डिस्ट्रैक्ट डाउन आउट थाए जेतले एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी टेंशन सेतल बढ़े सेतल टेंशन कमिबो जेतले एग्जीक्यूटिव पाखे ब्रूट मेजॉरिटी थाओ
2014 ରୁ 2024 बीजेपी वाज इन ब्रूट मेजोरिटी बुझी पार्छ से चाहे ऑर्डिनेंस भी आनी परिबो किछि विदाउट द जूनियर पार्टनर्स बुझी पार से बिल भी आनी परिबो स्ट्रक डाउन भी किछि भी कर परिबो बट हां एनजेसी वाज एन एक्सेप्शन बट हाँ से मुझे कहीपर 2014 नुआ सरकार आसला जुडिशियरी ताको बहुत जरूरत कर देता किंतु जो एक्जिक्यूटिव जुडिशियरी टू बेसी पावर थबो ना एक्जिक्यूटिव कैन डू एनीथिंग जेतले कोलिशन गवर्नमेंट आसी जुडिशियरी रोल इज वेरी इंपोर्टेंट जुडिशियरी इज ग्रेटर देन एक्जिक्यूटिव कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हैव्स टू कंसल्ट विद द जूनियर पार्टनर्स से जुडिशियरी रोल बेसी जाए माने बेसी पावर इन्फ्लुएंस करते तापर लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी कॉन्फ्लिक्ट्स पार्लियामेंट क्लेम्स लॉ मेकिंग इज एन एक्सक्लूसिव डोमेन जुडिशियरी एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ठीक अछि एंड जैसे ए सब जिंस लिख परियो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर लेजिस्लेचर कोन फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पार्टी व्हिप रिड्यूसेस इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी डिक्लाइनिंग सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट वीकेंड्स अकाउंटेबिलिटी गोटे जिंस कहबी जेतल 1960s रे थिला ना 1960 एवरेज सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वाज 120 days now it is reduced to less than 60 days accountability nahi neither legislative is having accountability of executive yeah executive is having accountability on legislative nahi se mane kichi kei कहू नांती बुझी पाछ डिक्लाइनिंग सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज वीकेंड्स अकाउंटेबिलिटी एक्जीक्यूटिव किछि कहू तापर जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस ओवररीच courts intervene where government failures affect fundamental rights ठीक अछि critics argue that courts sometimes enter policy making ठीक अछि policy making यार गोटे एग्जांपल दे परिबी आईएएफ रे जितले वुमन विंग को वुमन पायलट को आई डोंट रिमेंबर द केस बट वुमन पायलट को एंटर करिया पे कहउथले सेही टाइम रे बुझी पाछो इट वाज स्पेशली डिजाइन फॉर द मेल डोमिनेटेड पायलट्स बट सुप्रीम कोर्ट कहला कि यू हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर द वुमन पायलट्स बट प्रॉब्लम है कि आईएएफ रो जो स्ट्रक्चर अच्छी ठीक है जो स्ट्रक्चर गुड़ा अच्छी तमें रात रात तो चेंज करि परिबोनी एंड आ गोटे कथा है जो पायलट्स अच्छे ना दे आर बोर्न फॉर द व्हाट से माने कोन एरोडायनामिक्स को फोकस करते इज वुमेन्स बायोलॉजिकल बॉडी इज फिजिबल सेटा पुणी डॉक्टर को चेक करिया पड़िबो एटलीस्ट तो मेडिकल लीगल इम्प्लिकेशंस नवा पड़िबो किंतु कोर्ट्स कोन कहतला तुम डायरेक्ट पॉलिसी आनो ताको केमिति एंटर करा कथा सो दे वर एंटरिंग द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच परे हाँ परे पायलट्स ओडा आसिले परे तांको पे वर्क प्लेस बना हला फोन फ्लेक्सिबिलिटी देखा गला बुझी पारछ बट पायलट्स वेर मेनली कोन जो फाइटर पायलट्स जदी होछ ना दे आर मेनली मेल डोमिनेटेड तमे भी जदी भी ऑपरेशन सिंदूर देखिबो इट वाज अ मेल हु स्ट्रक डाउन द एयर बेसेस ऑफ what Pakistan thank you women are not mane allowed to know women are not at all mane preferred for this combat बुझी पाछ obviously जेतल combat situation हो ना if a male pilot is captured किछ problem no it doesn't matter but a woman pilot is captured ना then problem आसी पारे so दुश्मन कौन कर परियो सेटा तुम जानथो सेति में कुछ anyways judicial review present unconstitutional laws like Keshav Nanda Bharti हाँ so judicial review is mandatory right now Keshav Bharti case रे basic structure and basic structure doctrine कौन करे it कोई पर it also create a balance between judiciary executive and legislature अब this checks and balances भी आसे रे through basic structure doctrine तापरे हाँ ठीक अछि तापरे आउट जिंस लिखि परिबी कि गवर्नर पावर को नहीं लिख पारे गवर्नर ओवरस्टेप्स ऑन द सीएम्स डोमेन यूजिंग आर्टिकल 163 ताको डिस्क्रिशनरी पावर थाए मे बी वी नीड टू अमेंड दिस आर्टिकल डिस्क्रिशनरी पावर डेफिनेशन कोन सेटा भी तुम चेक कर तुम सेटा कोन तुम सेटा एज एन कोन वे फॉरवर्ड तुम लिखि पारिबो वेग आर्टिकल 163 सेटी डिस्क्रिशनरी पावर्स मेंशन करा जाय तार किछ नाही बुझी पार सरकारी कमिशन कोन कहतला पूंची कमिशन कोन कहतला तांकर स्टेटमेंट तुम ता भीतर देई पारिबो बुझी पारछ तापर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कोन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कैग जुडिशियरी कंटिन्यू टू चेक गवर्नमेंट एक्सेस कैग सका से ही 2013 रेवोल्यूशन आस्तला इट इज बिकॉज ऑफ द कैग जेहेतु एटा पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम बॉडी कहते कहीं सब जिन ही कैग चेक करला बट इट ब्रॉट रेवोल्यूशन तुम जान आई डोंट नो तुम जान 2013 रे मतलब अब तो हो ही गया चलो चलो जंतर मंतर से दिल्ली रे थिला 13-12 रे कथा कहूँ बुझी पार्छ इट इज बिकॉज ऑफ द कैग कौन 2G स्कैम तापर कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम एठी कौन पर्दाफाश हेतला तमे रातो रात 2G स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देतला गवर्नमेंट रो 1.76 लाख करोड़ घाटा हेतला सो एठी कौन हो executives have been checked by the executive itself and they are accountable in the parliament कहीं कैग रो रिपोर्ट द पार्लियामेंट टेबल होबो ना आ सेठी कोन हो लेजिस्लेचर विल चेक द एग्जीक्यूटिव बुझी पार्छ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कोन करिवो इलेक्शन कमिशन ऑफ ECI बिकम ए वर्चुअल सीएम ड्यूरिंग इलेक्शंस आ सेतो सीएम रो मनमानी चलीबो नाही बुझी पार्छ तो एडा अछि जदि कोर्ट जदि कहि परिबो द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड नॉट द रूल ऑफ मैन कहीं ही इज अ लोन डिसीजन जज ऑफ एडीएम जबलपुर केस कहीं कहला इवन 2021 कैन बी सस्पेंडेड एडीएम जबलपुर केस रे कहितला बुझी चाहे भी लिखि परिबो कोर्ट ता इट्स नॉट दैट इंपोर्टेंट बट हां एटलीस्ट एट तो देछि गोटे ओवरव्यू देछि सो दैट डिस्कशन करले ही किछि भारी discuss the role of finance commission in center state relations critically examine the key recommendation of 6th constitution देखो एटा सेति में देछि ओडिसा रो ला देखो गोटे लाके फाइनेंस कमिशन हम जानछु 280 आर्टिकल 280 रे जदि भी तुम फाइनेंस कमिशन ऊपर स्टेटमेंट लिखुछ है ना एटा को इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट द फिस्कल पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर लिख परियो इट इज देयर टू डिस्ट्रीब्यूट द fiscal powers at the same time it checks the it checks the fiscal deficit of both center and state कहीं फाइनेंशियल हेल्थ भी मैटर करे गोटे राज्य रो विकास पे फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मैटर करे एंड फाइनेंस कमिशन रो एडवाइस भी नबा कथा बट तुम जानिथबो स्टेट फाइनेंस कमिशन रो एडवाइजर्स केबे भी राज्य सुनंतिनी फाइनेंस कमिशन द बिल फाइनेंस कमिशन द रिपोर्ट पार्लियामेंट्री टेबल हुए the state finance commission report केबे भी legislature assembly legislative assembly table हुए छाड़ी दियंत काहे कि सेठी कहबा ना स्टेट फाइनेंस कमिशन कोन कहबा अर्बन लोकल बॉडीज हेगला या लोकल बॉडी रूरल लोकल बॉडीज हेला तांको पैसा दियो से माने बहुत पैसा दाबा कहबे सेते पे गवर्नमेंट दियंती किंतु फाइनेंस कमिशन जो यूनियन फाइनेंस कमिशन अछि से माने जहां भी कहबे ना इट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग बट गवर्नमेंट तारा फिस्कल इंबैलेंस न करबा को हेले दे विल फॉलो दैट नोले गवर्नमेंट ऊपर कोन आसे मनमानी रो टैग आछिबो तमे फिस्कल कंसोलिडेशन तमे मनमानी हिसाब रे करछो नाही हमरो निर्मला सीतारामन जे कहिला जहां भी करूची मु फाइनेंस कमिशन हिसाब रे करूची तमे सने मते अक्यूज करछो बिकॉज़ आई एम फेवरिंग दिस स्टेट दैट स्टेट मु तमरो जीएसटी खाइ गेली नाउ आई एम डूइंग एज पर द फाइनेंस कमिशन बुझी पाछो दैट इज व्हाई फाइनेंस कमिशन इज देयर नीडेड फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशंस देखो how it has been written article 260 part 12 of the constitution of deal with the center state financial relations beside this 7th schedule of the Indian deal with the several states ठीक अछि कोन it corrects the vertical fiscal imbalance काहे कि सेंटर पाखरे पैसा आछी ताको फोनी हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करियो विद इन द स्टेट्स राइट काहे कि सेंटर पाखरे जदी 100 टका आछिबो से 41 रुपीस कोडी सेंटर भितरे डिस्ट्रीब्यूट करिवो स्टेट भीतर डिस्ट्रीब्यूट करिवो तार फार्मूला की देला फाइनेंस कमिशन देतला कोन फार्मूला जदी 15 फाइनेंस कमिशन देतबो ना से पॉपुलेशन हिसाब रे देतला तापरे कोन तापरे फिस्कल मेजर्स फिस्कल डेफिसिट हिसाब रे देतला इनकम इनइक्वालिटी ऊपर देतला बुझी पाछो तापरे कोन देतला बुझी से हिसाब रे देतला है ना क्योंकि एडा सब कोन एडा these are the terms, these are the conditions where that 41% of centers money will be distributed तमे कोन भाउ जेतले देखो जेतले हमर जो जीएसटी हमर कोन दिला पेट्रोल ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी पड़े ना केते एबे केते अछि 20 समथिंग अछि ना 20 रुपीस जो सेंटर निए पेट्रोल तार 41% तो जाउछि परे सको सेंटर कोन करछि
स्टेट को माने स्टेट को देउछि ना 20 रुपीज तुम सीना कहो सेंटर सीना 20 रुपीज चार्ज करुच्ची भाई तार 41% से स्टेट को दिए आ बाकी सी खर्च करबोनी तार जो स्कीम्स गुड़ा अच्छी तो रेकमेंड द शेयर ऑफ इंडियन टैक्स टू डिवॉल्ट एटा तार गोटे करेक्ट्स द वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस तापर 15th फाइनेंस कमिशन रेकमेंडेड 41% सेम जिनस 16 फाइनेंस कमिशन भी अच्छी सेम 41% ही रखी आगर 14 42% थिला परे जम्मू कश्मीर जो यूनियन है तो 41% कर देले इट स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द 16th फाइनेंस कमिशन लिंक ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमिशन ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी गोटे जिनस है कि 16th फाइनेंस कमिशन कहे तुमको 80% ऑफ तुम जो टैक्सेस अच्छी तुमको अर्बन लोकल बॉडीज को दवा पड़ो बुझीपार अर्बन लोकल बॉडीज को तुमको दवा पड़ो तापर आउ प्रमोट फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एथर एक क्वेश्चन पड़ता जी जी आंसर करथबो मुझे कही थी आई थिंक मुझे जो पढ़ू तुम कही 3 तुम सेट कर 3.5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओपीसी ऑप्शन देते 2.5% देता ये सो ये 3% देता माने देखो जदि प्रमोट फिस्कल रेस्पॉन्स माने कौन जदि तुम 3.5% आउ 3% स्टेट मेंटेन करछि कौन फिस्कल डेफिसिट ता माने तुमर जो फिस्कल हेल्थ अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ भल रहिबो तो जदि तुम फाइनेंशियल हेल्थ भल रहिबो सेंटर एंड स्टेट भितर फ्रिक्शन भी कमी जीवो बुझी पारछ स्टेट मनोच्छा माने मनोच्छा खर्च करिबोनी स्टेट खर्च करिबा एज पर द फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन एज पर द स्टेट फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन बुझी पारछ आउ सेंटर पाखरे भी पैसा रहबो आउ सेंटर तार ग्रांट्स देई परिबो पैसा थिले सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट प्रमोट फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी तापर हमर ओडिसा रे 6th फाइनेंस कमिशन एटा तो प्योरली तुमको कोन फैक्चुअल जानिया को पड़िबो काहे कि अछि समथिंग एके पंडा राइट एके पंडा सर 6th फाइनेंस कमिशन काहे तार आर्टिकल कोटे 243 आई रो आछि इट रिकमेंड्स एम टू डिपेंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल एंड ऑटोनॉमी कोन देछि हायर फिस्कल डेफिसिट कोन एथर कहछि 50,000 कोटी फॉर पीआरएस एंड यूएलबीस हैला ता भितर गवर्नमेंट केते एक्सेप्ट करछि 45,607 तो सी कहछि 50,000 करोड़ जितला 50,000 माने जदि स्टेट रो इनकम हो वर्ष भीतर जहां भी इनकम अछि तार 50,000 करोड़ तुम काउ दबो पंचायत राज को दबो और अर्बन लोकल बॉडीज दबो स्टेट केते कहछि 45,607 कहछि ठीक अछि एटा तार फिस्कल डेवल्यूशन थिला तापर रेकमेंड फाइनेंशियल डेवल्यूशन कहते रेकमेंड 29% स्टेट्स डिविजिबल ट्रांसफर टू डिवॉल्व टू लोकल बॉडीज ensures the predictable funds to panchayat and urban local bodies however local bodies still dependent माने critically examine करिया पे कुछ ना however local bodies still depend heavily on state government because they have limited power to raise their revenue देख गोटे जिनसा लागे स्टेट जहाँ भी माने तार से जहाँ भी फंड अलोकेट करथबो लोकल बॉडीज पाई हैला लोकल बॉडीज पाई जहाँ भी अलोट कर तार 29% पंचायत को जीवा कथा एटा के देछि हमरो स्टेट फाइनेंस कमिशन देछि कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो आम पंचायत राज अच्छी ना तांकर टैक्सिंग पावर बहुत कम अच्छे से निजे टैक्स करें से आर दे आर ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्टेट डिविजिबल ट्रांसफर्स एटा गोटे फाइनेंशियल डिवोल्यूशन तापर एचआरडी फंड इट्स प्रपोज्ड एचआरडी फंड यूजिंग 1% ऑफ ओडिशास माइनिंग रेवेन्यू गोटे जिनस है कि एचआरडी फंड माने बुझी पारछ तो एबे स्टेट फाइनेंस कमिशन को तुम एचआरडी फंड गोटे अलोकेट करो ता भीतर तुम किछि पोस्ट क्रिएट कर दियो ऑडिटर पोस्ट क्रिएट कर दियो माने तमे किछि आईएएस ऑफिसर्स को ताते नियुक्ति देथिबो एटलीस्ट जो फंड उडा आसीबो सीरा ठीक ठाक जगह रे तमे स्पेंड करि परिबो बुझी पाछो प्रपोज्ड एचआरडी फंड कहीं ता भीतर कोन कहै 1% ऑफ ओडिशास माइनिंग रेवेन्यू माने 2320 करोड़ टू स्ट्रेंथन द मैन पावर बुझी पाछो तुम ऑडिटर रिप्रेजेंट कर देलो ऑडिटर माने रिक्रूट कर देलो और आईएएस ऑफिसर रिक्रूट कर देलो और आईआरएस रिक्रूट कर देलो काहे से पंचायत हेगला या से पूरा डिस्ट्रिक्ट पंचायत हेगला तार केमिति फाइनेंशियल डेवल्यूशन हबो से देख सेति में सेट हबो पई सेति में एचआरडी फंड कथा कहै हैला सो द funds alone तार ड्रॉबैक और funds and alone cannot strengthen local bodies but it can train people बुझी पाछो तुमको ट्रेनिंग देवा पड़े से हिसाब रे इट डिपेंड्स सो इट्स सक्सेस डिपेंड्स टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट काहे देखो गोटे जिनसा लागि स्टेट सिना कहि देला मति देबी दबो कौन गारंटी अच्छी दबार किसी गारंटी नहीं सो एज ए क्रिटिकली एग्जामिनिंग
its success depends on these funds. आउ कौन कौन देछि ODF सस्टेनेबिलिटी है ना, ओपन डेफिकेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गोटे जिनस मेन प्रॉब्लम कौन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूरल रे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कौन हो आई डोंट अंडरस्टैंड मु जाइतली गोटे गाँव को जाइतली मु देख देखि से प्लास्टिक रे कचरा पड़ी आइदर व्हाट दे विल डू आइदर दे विल बर्न देम और बरी देम बरी कर देम कौन हम लास्ट को बंजर जमीन हे जियो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट केमिति करा छै सेडा बेटा वाटर रिसाइक्लिंग ऑल दैट ओके सो दिस इज द क्वेश्चन कमेंट देख दो वे फॉरवर्ड कौन देछि ठीक अछि अच्छा पड़ेलानी हाँ ठीक अच्छे बुझी तो हो एनी डाउट यू कैन स्टिल आस्क मी ओके एनीवेज जदि डाउट है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ ओके एनीवेज how did the emergency change Indian politics and political discourse? What were its long-term constitutional and institutional impact? देखो गोटे जिनस है कि आई थिंक आई वाज चेकिंग समवन्स कॉपी इमरजेंसी ऊपर कॉपीटा चेक करथली राइट या गोटे जिनस है कि एटा मु एक कॉपीटा मु चेक करथली आई थिंक हर नेम इज प्रांजल एडी देखो हैला हाउ डिड इमरजेंसी चेंज इंडिया देखो एड लिखा है द पीरियड ऑफ दिस डेट लिखा है 75 76 शो द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी by then the president Jail Singh on the advice of Indira Gandhi, which is referred as the dark age of Indian democracy due to misuse of political power. However, it shaped the long term political कोड जिनस लाकी emergency is a very famous है कहीं तापें जून 25 को संविधान हत्या दिवस भी कहते ओके गवर्नमेंट ताको इनफेमस तो सेलिब्रेट कर जितने तुम लिखुच ना प्लीज नेवर डू दिस मिस्टेक 76 नो एटा 77 एटलीस्ट रिमेंबर द डेट कौन थिला जून 25 रु 1975 टू मार्च 21 77 प्लीज रिमेंबर द डेट है दिस इज 77 ठीक अच्छे कहीं एग्जाम तुम एमती आंसर ही लिखी पार से शॉ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय देन द प्रेसिडेंट जेल सिंह नो सी किए सी फखरुद्दीन अली अहमद बुझीपार तुम आंसर भल लिखी बट तुम भाव तो तुम ये 1 मार्क खंडे डिडक्ट हो जाए ऑलरेडी से 5-6 दबा जाओ से 5 देदेव इवन दो यू हैव रिटन गुड आंसर्स सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डार्क एज है ना डार्क एज ठीक अच्छे द रोल ऑफ इमरजेंसी इन चेंजिंग इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स एस्टाब्लिश कोलिशन पॉलिटिक्स कहीं एस्टाब्लिशमेंट जनता पार्टी फर्स्ट टाइम जनता पार्टी आसला आफ्टर 1977 इलेक्शन रे टोटल स्वीप कर देथिला कांग्रेस वाज ऑलवेज इन द बैक फुट हैला एडी को हमरा क्वेश्चन कोन डिमांड अछि क्वेश्चन डिमांड है कि देखो क्या कहां गया क्वेश्चन हाउ डिड इमरजेंसी चेंज द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स व्हाटएवर इट इज लॉन्ग टर्म इमरजेंसी होकर से पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स कौन चेंज है एडाला क्वेश्चन पॉलिटिक्स हिसाब से जनता पार्टी इमरजेंसी होता जनता पार्टी बस कौन बिहार आसला ताकू पुणी गोटे लोकल कॉलेज इश्यू प्रॉब्लम होता किंतु ताकू रिलेवेंस मिलगला बिकॉज ऑफ दिस इंदिरा गांधी टायरनी पॉलिटिक्स कहीं ड्यूरिंग इमरजेंसी वी नो इंदिरा बिकम इंडिया एंड इंडिया बिकम इंदिरा strengthened role of judiciary during the emergency significant measures taken to weaken the judicial activism by limiting judicial review ठीक अच्छे
कहीं जुडिशियल एड तो मेंशन कर देबा 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट रे आर्टिकल 368 क्लॉज 5 एंड 6 एडा इंसर्ट हेतला आर्टिकल 13 क्लॉज 4 भी इंसर्ट हेतला एडा कोन थिला जुडिशियल रिव्यू को पूरा तळे तळान कर देतला से टाइम रे जस्ट मेंशन द आर्टिकल गोटे जगह रे इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन बुझी पारछ माने एमिति बुझी पारछ the aftermath short reclaiming judicial review and checking executive कहेंगे 44th yeah this is a good answer so it is 44th constitutional amendment provides strength for the further misuse of power कहेंगे देखो तो 44th constitutional amendment कौन judicial review ओडा restore हो जाइथला maximum कहेंगे देखो गोटे जिनस जो 368 4 and 5 को ना सेटा सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देथिला कहेंगे मिनर्वा मिल्स केस रे सेटा तुम लिखि पारिबो तार आफ्टरमाथ कथा कुछ बुझी पार सेटा तुम लिख मिनर्वा मिल्स केस रे जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ताको सेतल कहतले प्रोवाइड हां 44th कोला प्रोवाइड सेफगार्ड फॉर द फर्दर मिसयूज ऑफ पावर चेंज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विथ आर्म्ड रेबेलियन चेंज ऑफ इंटरनल डिस्टर्ब विथ आर्म्ड रेबेलियन को आसी जतला कोन थला वीआर थला ना एडा थला कि नेशनल इमरजेंसी रे कोन थला वीआर आसी जतला वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन तो एडा तो हम लिखि पारिबो हेडिंग चेंज कर देथिले तारो है ना बट हां हमें जानि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इज स्टिल एग्जिस्ट इन 355 एडा तो हम जानि थाओ एडा प्रीलिम्स पॉइंटरटा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस स्टिल देयर इन 355 तापर it strengthened democracy as an immediate effect the successive elections saw Indira Gandhi and Sanjay Gandhi the main architects of emergency losing their seats even being powerful politicians कहेंगे संजय गांधी कौन कर देथिला फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम आनी देथिला बुझी पाछ से टाइम रे एडीएम जबलपुर केस आस्तला आर्टिकल 2021 वेर नॉट एट ऑल सेफ 44th अमेंडमेंट पर आसीला आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी माने any cases article 2021 violate hai paribon it reiterated the power of the will of the masses and realization of political parties that democracy is the rule by the people bujhi pacho to it restored the rule of the people and the rule of the men okay tabare long term question impacts kon achi yeah June 25 please write this संविधान हत्या दिवस this is a very good answer एडा तुम लिखिबो ना एडे खुशी जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन सेते पे तो देखो गोटे जिनस लागी कांग्रेस को टार्गेट करिया पे संविधान हत्या दिवस मना होची एंड हां एडा गोटे टाइम हम रिमेंबर करिया भी कथा काहे डेमोक्रेसी वाज टेकन फॉर अ टास्क एट दैट टाइम बहुत सारा लोग छन इवन माय फादर आल्सो फेस से आई मीन ही वाज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट हां तंकर एते ये नो फ्रीडम नथिला बट हां he was also tortured at that time बुझे पड़छ नॉट टॉर्चर तो कहि परी हां ताको हिरासत रे नहीं जेतले से टाइम रे बिकॉज़ से बाहर को आस्तले काम पई माने मिस पुलिस ताको नहीं जेतले हिरासत रे से जानि पड़लनि कि हां एडे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तन काम को जाउतले पर आई कार्ड देखला पर से छाड़ले तो कोन लिबर्टी तुम जो इंडिविजुअल लिबर्टी गेला फ्रीडम गेला ऑल वेंट टू गटर The Supreme Court direction of states not to use preventive detention as substitute of maintaining law and order. सेति पे मु कहूची जो preventive detention अछि ना preventive detention ता बहुत misuse होय. Supreme Court तार judgment देचे but हाँ still there can be improvement. Preventive detention जो अछि we need to improve these laws. So preventive detention को तुम arbitrarily तुम use करि परिबो नाही. No declaration of national emergency post that. आउ तो national emergency आसी नाही. स्ट्रेंथन कहीं आम जानी जे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिवो तार नेक्स्ट ईयर सत्ता आसीबार चांस ही नाही ती जानि त स्ट्रेंथन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ठीक अछि ओके तापर मु कहि परिबे 31C रो जो जुडिशियल रिव्यू थिला जो कट कर देथिले पर जुडिशियल रिव्यूटा रिस्टोर हो जाइथिला एडा मु लिखि परिबे बुझि परछ रिड्यूस डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस एंड मल्टी पार्टी एंट्री ऑफ सिस्टम ना फर्स्ट टाइम it gave a non congress prime minister said I'm like paribi although the emergency period stands at a period of irrational democracy but at the same it acted as a blessings in disguise ठीक अछि एडा भी लिख उ जोड़ा देइछ तुमको देखो सिविल लिबर्टीज
पढ़ाई प्रेस सेंसरशिप पढ़ाई आम जानू ये जो तुम लिख इंडियन एक्सप्रेस लेफ्ट ब्लैंक स्पेस टू प्रोटेक्ट सेंसरशिप मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट तार बहुत मिसयूज होता से टाइम जनता पार्टी जेपी नारायण एटा फॉर्म होता 42nd अमेंडमेंट को माने पावर बहुत अनलिमिटेड हो जाता से टाइम कौन 4478 कौन रिचेक करदेला तो 77 जनरल इलेक्शन बिकम ए रेफरेंडम काइंड ऑफ रेफरेंडम इन द वर्ड यूज करो वर्चुअल रेफरेंडम फॉर द इमरजेंसी जुडिशियल रेफरेंडम एडीएम जबलपुर केस वाइडली क्रिटिसाइज गोटे पॉइंट भितर बहुत जिन आसीगला एडीएम जबलपुर आसीगला गोटे रेफरेंडम आसीगला 77 इलेक्शन आसीगला 44th कौन अमेंडमेंट आसीगला तुम चाहिए आर्टिकल 368 4 and 5 कथा भी लिखि पारियो इट वाज ग्रेटर देन द जुडिशियल रिव्यू एड एग्जांपल दे पारियो बुझि पार तो एड कौन लिखा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर इज अ देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी गोटे जिनस कौन जानछ सोशल डेमोक्रेसी हमर वीक थिला बेली कौन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी र हत्या हो गला एटा अंबेडकर साहब कहते जो सोशल डेमोक्रेसी हमर जदि भलो रहइबो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो जिवो तो सरकार को बेसी पॉलिसी आनिबा पड़िबोनी जदि कास्ट बेस्ड डेमोक्रेसी जदि कम हो इनइक्वालिटी जदि कम हो तो कहीं स्टेट सोशल आम सोसाइटी मैच्योर हो सोसाइटी जदि मैच्योर हो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भलो रहइबो बुझि पार तो एनीवेज एक क्वेश्चन ठीक अच्छे तब एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन एक्सक्लूसिव फंक्शनिंग एंड सपोर्टेड आंसर विद एग्जांपल्स ठीक अच्छे पार्लियामेंट्री कमिटीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ एटा देखो बेसी किसी आगे कहर ना कहीं आम जानू पार्लियामेंट्री कमिटी रे गोटे कौन अच्छी स्टैंडिंग कमिटी अच्छी एंड एडहॉक कमिटी अच्छी है एडहॉक कमिटी स्टैंडिंग कमिटी बहुत महत्व अच्छी ता भीतर 22टा डिपार्टमेंटल कमिटी अच्छी ता भीतर कौन अच्छी हाँ एस्टिमेट कमिटी अच्छी और मोस्ट इंपोर्टेंट पैक अच्छी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी अच्छी दीज आर वेरी इंपोर्टेंट कमिटीज एंड आपको पोस्टमार्टम कमिटी कहते एमाने कौन पैक को पोस्टमार्टम कमिटी कहते आउ एस्टिमेट कमिटी कौन से एस्टिमेशन भी दिए जो बजेट आसे से एस्टिमेशन दिए को पैसा एते यूज करया कथा नु हैला यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स है ना पार्लियामेंट्री कमिटीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एमपीज दैट एग्जामिन बिल्स government expenditure and functioning of ministries they help parliament perform legislative financial and oversight this ठीक है introduction में मैं देला significance quality of bills कहेंगे joint committee on protection data protection bill को तक ऑलरेडी ता पर बहुत डिस्कशन डेवलपरेशन से जे एबे कोन जे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आस्टे विथ अ रिफाइंड बिल कोइ परिबे तब आउटे मु कोइ परिबे कि जॉइंट सिलेक्ट कमिटी हेतला कार वक्फ बोर्ड तुमको समिति भी मेंशन करिया पड़िबो बुझि पा ता भीतर वर्ष सारा डिबेट एंड डेलिब्रेशन चलथिला एंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी they ask officials to explain delays mistake on pack examine 2G spectrum allocation based on CAG report to check whether public money was properly managed eta goda point bhala point bujhi pacha tapre strengthen financial control parliament cannot examine every ministry budget in detail committee study expenditure and suggest ways to save public money the estimate committee recommends economy tape dekho एट तुम लिखि पारे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी हैला प्रति डिपार्टमेंट पे गोटे हेल्थ पे गोटे स्टैंडिंग कमिटी दे देले पीडब्ल्यूडी पे गोटे स्टैंडिंग कमिटी दे देले तो प्रति डिपार्टमेंट पे स्टैंडिंग कमिटी अछि एटा केतरा 21 टा बोधे सो इट एग्जामिन द फंड्स ऑफ दोस डिपार्टमेंट सो एडी कोन आउरी फंड रो एफिशिएंसी बढ़ी जाय तो एटा तुम देख प्रमोट बेटर पॉलिसी मेकिंग ठीक अछि द स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक पब्लिक कंसर्न्स अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज ठीक अच्छी तो ये जिन लिख पार हाँ ये मुझे कौन लिख छाड़ देती वक्फ बोर्ड टा चलता वक्फ बोर्ड से तुम लिख सेट कमिटी ऊपर चलता ठीक अच्छे पार्लियामेंट डिबेट्स एंड कमिटी डेलिब्रेट एटा तुम लिखिपर द पार्लियामेंट कमिटीज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट दे आर एसेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड एंड पार्टिसिपेटरी लॉ मेकिंग बट द रिकमेंडेशन शुड रिसीव ग्रेटर इंपोर्टेंस ठीक अच्छे गोटे देखीदेवा is written or not ठीक है we'll see this okay examine the significance of parliamentary committee on legislative functioning so parliamentary committees are often termed mini parliament ठीक है it's a very good nice answer ए वर्ड तुम लिखिबो mini parliament
बुझे देख आम डिस्कस कर किसी ना किसी तो भितर जीव ना से हिसाब से तुम देखो से even though it is not at all linked किसी ना कि जब पार्लियामेंट्री गोटे कमिटी ऊपर क्वेश्चन आसीगले मिनी पार्लियामेंट लिखिबार कौन अच्छे लिखिदब एट द एंड हमको आंसर ठीक ठाक फ्रेम करार अच्छे because they are the mirror to the political composition and enter house in smaller highly efficient working format while the constitution provides their foundation basis 105 and 118 ठीक अच्छे ओके ओके पार्लियामेंट्री कमिटी कौन एडहॉक कमिटी गोटे अच्छी जोटा कि टेम्पररी आउटस्टैंडिंग कमिटी अच्छे बुझीपार तुम आउ गोटे जिन लिखिपर जो हर्षल मेथा स्कैम होता राइट से आमर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म होता या कहीपर मोर मन नहीं कौ कमिटी फॉर्म होता बट हाँ तुम एस्टिमेट कमिटी होगा या पीएसी तुम एक्जाक्ट जिन लिखा दरकार जो हर्षल मेथा स्कैम होता से जिनस को रिव्यू करते एंड से बहुत सारे चेंजेस आने कहते पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स आसला even though it is right or not you write that कहीं it helped in more reforms बुझीपार से माने माने से दैट गाय जे चेक कर ही इज नॉट गोइंग टू चेक बहुत जिन चेक कर हर्षल मेहता स्कैम बहुत फेमस फिगरटा ताको देखदेले तुम आंसर भी बहुत वैल्यू हो जाए पब्लिक सेक्टर बैंक को से रिफॉर्म करा कहीं से स्कैम तो सेटू ओरिजिनेट होता इवन प्राइवेट बैंक को आईसीसी बैंक को ग्रेटर कंट्रोल आरबीआई अंडर को आसिया पड़ला आरबीआई भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आसीगला बुझीपार आईसीसी बैंक थिला प्लस सी थिला कि आउट बैंक थिला आई थिंक एचएसबीसी बैंक ता थिला मेन घोटाला जे करथिला significance legislative scrutiny reviews bills one by one ठीक अछि allows for the objective merit based consideration India's digital personal data protection ठीक अछि so this is a very important point legislative scrutiny financial scrutiny कौन अच्छा लगे पैक 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट स्पेक्ट्रम तापर आउट जिन लिखि पार कौटा कहल कॉमनवेल्थ घोटाला से भी तुम लिखिपर है सकाशे गवर्नमेंट ही पलैला तापर आउट राजीव गांधी टाइम रे बफर स्कैम से भी तुम लिखिपर से फ्लैग द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तापर executive accountability some amounts bureaucrats and misuse to answer the political failures ठीक अच्छे हाँ ओके इवन प्राइवेट माने कौन इवन प्राइवेट जॉब होल्डर्स ये तुम लिखिपर हर्षल मेहता स्कैम रे कहीं बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एचएसबीसी बैंक होगा आईसीसी सम्मान करते से टाइम बुझीपार तुम स्कैम डिटेल जानवा दरकार नहीं सम्मान करते कहीं एटा सब बड़ बड़ बैंक बहुत सारा को पैसा थाए आ से पैसा जदि इरेगुलर मिसयूज हो ना सो जहाँ भी ताको रेगुलेट करिया पड़िबो public and expert participation bridges the gap between citizen expert and lawmakers ठीक अच्छे they systematically invite memoranda accept public feedback and record testimonies from civil society ठीक अच्छे industry leaders and academic expert ठीक अच्छे कौन यूके सिलेक्ट कमिटी गैदर साइंटिफिक डाटा फॉर क्लाइमेट लॉस गोटे जिनस कौन आंच आमे आमे एठी गोटे सजेशन दे परिबा सजेशन कौन दे परिबा फॉलो द यूके मॉडल especially estimate committee and public account committee कहीं से जो दीटा जो पब्लिक अकाउंट इवन कैग को भी नहीं कहीं से एस्टिमेट करते ना से बजेट खर्च केमिति हम से हिसाब से बजेटा हो जाए यूके फॉलो कथा कहूँ यूके रे जो पैक अच्छी इसी अच्छी कैग अच्छी ना बजेट केमिति फ्रेम हम से हिसाब से रिपोर्ट फ्रेम कर आमर कौन अच्छे आमर बजेट हो गला फंड ट्रांसफर भी हो गला मिसयूज हो गला तापर गोटे चेक आसुची सो एटा कौन पोस्टमार्टम हो गला सो आमे सजेशन रे आमे फॉलो द यूके मॉडल एटा कहि परिया एनीवेज तो एटा थिला due to time constraint parliament often pass board framework laws and delegate rule making proposed parliament ठीक अछि सो एट माने कोन एडी ब्यूरोक्रेसी चेक भी हे परिबो लेजिस्लेटिव चेक भी हे परिबो पब्लिक एक्सपेंडिचर चेक भी हे परिबो सब जिंस हे परिबो सो इट्स ए ओवरऑल इज अ नाइस आंसर ठीक अछि एनीवेज ओके
So I think I have discussed all the answers. So मुझे doubt अच्छी, you can ask me right now. Okay, तमें unmute करी कथा भी परिबो. Okay. So if there is no doubt, then we can end the session.